So again, CLAT type examples. Let's take a look. We're going to take a look at the 2023 CLAT, that is the December 22 wala paper. Let's take a look at the questions. So the first passage on the screen. Read. Any doubts? Fine. So can you tell me basically what does the passage say? What does the passage say? See, either you understood the passage or you did not. If you did not understand the passage, you could have asked, but nobody asked. So I'm assuming you understood. So if you have understood, that means you should be able to explain. So what is the passage about? Someone, anyone? So the passage is just says that on September 2020, September, there was a FIR, FIR towards the family. Two men and his relative saying that the women in the house was treated like a maid servant. And in the FIR, it says that she was harassed physically and mentally. But um, then afterwards, it says that as per section 489 of IPC 90, Forget the section. Okay. Dates and sections you can always refer to. And it says that if after marriage a woman is doing the work for the purpose of the family, it is not said as a maid servant. So if I want to summarize the entire passage in one sentence, what it is about. Maybe if the wife is doing something, the household work for the family, it is not said to be maid servant, but she maybe So what law is it about? yeah. What does the word quashing mean? Yes. Quashing a case of cruelty that was filed against a man by his wife, the Bombay High Court said that if a married lady is asked to do household work for the family, it cannot be said that she is treated like a maid servant. What does that mean? Quashing a case of cruelty. What does it mean to quash a case?
What is meant by quashing a case? Any idea? Any wild guess? It's not a legal term, it's a standard English word. To quash something. Dismiss something, to just cancel out something, to just say चलो इसको रफा दफा करो, कोई काम का नहीं है, right? So basically a wife filed a case of cruelty against the man, and then the court said that this case has no merit. इस केस को हम रफा दफा करते हैं. क्यों? Because just asking a woman, a wife, to do the household chore does not necessarily mean it is cruelty. Why? The court was hearing an application by the husband and his parents seeking that proceedings against them are quashed. So the case was filed by the wife first, case of cruelty, and now the husband and the family members have filed a case against them saying that this case is not valid. And the court agreed that the case of cruelty against you does not stand. Now, what happened? A first information report, FIR, was filed against the trio in September 2020, around 9 months after the marriage, alleging that they hounded the woman for money to purchase a car, harassed her mentally and physically, and treated her like a maidservant. So, originally, what happened? Some marriage took place. 9 months after the marriage, the wife has approached the police and filed an FIR. And what has she claimed? She says that one, they are harassing me for money to purchase a car, and physically and mentally they are harassing me, and they are treating me like a maid servant. These are all the things that she has claimed in the FIR with the police. Now, examining the evidence, the court found that there was no merit to the woman's allegations. Then obviously the court is not going to pass a judgment simply because somebody claimed something. They are going to say, what is the evidence? Show us the proof. And so whatever evidence the court was given, based on that, they said there is no evidence that there is cruelty. The court said that though the FIR says that she was treated poorly for about a month and then like a maid servant, there are no details of what this meant. If I claim that I'm being treated like a maid servant, what do you mean by that? How do you treat a maid servant? What is meant by treating somebody like a maid servant? किसी को नौकर की तरह रखना, उसका मतलब क्या हुआ? तेरे घर के नौकरों का पता नहीं, मेरे घर में अगर हमारे नौकर की तरह मुझे ट्रीट करे तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएं. मेरी काम वाली बाई इज द चहेती ऑफ बोथ माई वाइफ एंड मदर. मेरी काम वाली को जितना लीव मेरी माँ देती है उतना मेरे को अगर घर के काम में लीव मिल जाए तो मेरे तो भाग्य खुल जाए. If you say treating like a knocker means treating badly, then I feel sad for the way your servants are being treated. Then why did you say that treating like a servant means treating badly? Like giving money for the services. What do you mean by treat? I'm being treated like a servant. The answer is nobody knows. किसी के घर में हो सकता है अत्याचार कर रहे हो, किसी घर मेरे घर की तरह हो सकता है कि काश सबको ही सर्वेंट की तरह ट्रीट करी थे प्यार इश्क मोहब्बत से. So what do you mean by treating like a servant? Give us specific details. That's what the court said. Just because you said to the police कि मुझे नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, उसका मतलब कुछ नहीं होता. नौकर की तरह ट्रीट करना का मतलब क्या है? Right? They did not find any evidence. They said that they had no details of what this meant. So the court added, if a married lady is asked to do household work for the purpose of the family, it cannot be said that it is like a maid servant. घर का काम, झाड़ू बर्तन पोछा, whatever. If for the family somebody is asked to do, is that necessarily cruelty? They said for the family it may not be, right? They said the court held that the mere use of word harassment mentally and physically in the FIR is not sufficient to constitute an offense under section 498 of the Indian Penal Code. 498 is for domestic violence. पुलिस को जब क्या कहते हो, they are mentally harassing me. Please define mental harassment. मम्मी ने मेरे को कहा कि आज क्लास जाएगी, रास्ते में दूध 1 लीटर लेके आना, ये मेंटल हैरेसमेंट हो गया मेरा. अरे ये कौन सा मेंटल हैरेसमेंट हुआ? मम्मी ने जोर से चिल्लाया मेरे पे, मैंने भाई को मारा कल रात को तो मम्मी ने जोर से चिल्लाया, मम्मी ने मेंटल हैरेसमेंट किया मेरे पे. इट्स नॉट मेंटल हैरेसमेंट. सिंपली सेइंग आई बीन फिजिकली हैरेस्ड. क्यों? उसने मुझे टच किया. हाँ, टच किया का मतलब क्या है? मैं बीच में खड़ी थी तो उसने मेरे को ऐसे हटाया, फिर टच किया, फिजिकल. You can't simply say physical. You have to define, and it has to fall
in the mind of a rational person that this is physical or mental harassment, right? Just saying physical mental harassment without any evidence or without any explanation is not enough. And why? Because 498 of the IPC punishes the husband or a relative of the husband of a woman who subjects her to cruelty in any way. So when you say I have been tortured or I have been physically harassed, I have been mentally harassed, you have to convince the court that it falls under the definition of cruelty. Why? Because 498A section of IPC says if there is cruelty by the husband or the relative, then they can be punished for it. But that does not mean just say it and they'll accept it. So it is interesting to note that section 498A of the IPC also provides that if a married woman is actually treated like a maid servant, it would be an offense under that section. Now, this is a very interesting line. You say the wife claims that I'm treated like a maid servant is not enough. But the law says if she's actually treated like a maid servant, then it is cruelty. How do you interpret that? Because पहले तो यही बोला हर she was claiming I'm treated like a maid servant, कोर्ट से नहीं चलेगा. But law कहता है कि if she's actually treated like a maid servant, it is cruelty. मेड सर्वेंट का पहले भी मतलब हाँ? मेड सर्वेंट का मतलब पहले भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली ना क्या हो सकता है. नहीं, but law तो कहता है, law में तो लिखा हुआ है. They haven't defined who's exactly maid servant. So can we have a law which does not give me? Then how? If you are the judge, as a judge, you cannot change the law. You have to interpret the law. This is the law. How will you interpret it? What do you mean that if a married woman is actually treated like a maid servant, then it would be an offense? So what does it mean to be actually treated like a maid servant? What is the difference between a family member and a maid servant? Generally speaking. They don't live in the house. They They get money to they get money to do work. paid. So if you are actually paying somebody to do the work, then that is bad according to law. So मुफ्त में काम करवाओ चलेगा, लेकिन पैसे दो के काम करवाने के लिए तो क्रूअल्टी है. टेढ़ा डेफिनेशन नहीं हो गया ये? Is that how we are going to interpret it? Then how would you interpret it? Actually treated like a maid servant का interpretation क्या होगा आपकी नजर में? So technically speaking, something which I believe the law must intend is if you actually do not give respect to the woman as a family member, right? Asking somebody with respect to do the housework versus ordering somebody to do the work which you would not let other family members do. बाकी के घर वालों से तुम जो काम नहीं करवाओगे वो तुम इससे करवाते हो, और you're doing something which an ordinary family member is not expected to do. So basically it is a matter of interpretation, but it has to fall on the line of respect. That could be a possible interpretation. So if I want to summarize the entire thing in a line, I would say the case is about domestic violence and cruelty, and what is the difference between physical mental cruelty in reality and the claim. पैसेज समझ में आया? पक्का? Everybody, the questions. First one. Now, Ashwin and Ashima were married in Feb 2020. In March 2020, Ashwin asked Ashima to take care of all their household work such as cooking, cleaning, and other domestic chores, as he was very busy with his professional responsibilities. Ashima claims that this amounts to treating her like a maid servant and constitutes an offense under Section 498 of IPC. Applying the Bombay High Court decision, is she likely to succeed? So, like I said even last time, the first thing is without looking at the options, you have to decide yes or no. Will she succeed? No. No. तो yes वाले option तो उड़ा देंगे. That means A and C गया. Right? So between B and D, B says no, since Ashwin had only asked Ashima to do their household work and not for others, which possibly could be correct. And D says no, since treating a married woman like a maid servant would not amount to an offense under that section. By last line literally कहता है treating like a maid servant is actually cruelty. So D तो passage के last line से eliminate हो गया. So then my only reasonable answer in this case has to be B. Straightforward and simple. Okay. Now,
In April 2020, Ashwin's friend Rakesh visits Ashwin and Ashima's home and stays with them for a few days. During his visit, he's very mean to Ashima and uses abusive language with her. He also threw a plate at her one evening when he was unhappy with the meal that she had prepared. Ashima now claims that Rakesh has committed an offense under Section 498A of the IPC. Is she likely to succeed? B. Which one? B. B for Bombay. कितने लोग B for Bombay? Okay. B के अलावा कोई? Let's see. B says, question is she likely to succeed? B says yes, since Rakesh's use of abusive language and throwing the plate at Ashima clearly amounts to cruelty. Everybody goes with this. Pakka. Sure. सर मेरे को डाउट है Pooch. सर वो तो मेड सर्वेंट के लिए ना 489 है तो 498 है. 498 मेड सर्वेंट के लिए नहीं है. वाइफ के लिए है. वाइफ के लिए. मेड सर्वेंट के लिए नहीं है वो. वाइफ के लिए है. अगर उसे मेड सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है तो. एटीट्यूड का तो नहीं है कोई लाइक वो और अकॉर्डिंग वो बता दो और एटीट्यूड ये लोग सर Then what should be the answer according to you? सी You're going with C. That no, since Rakesh is not her husband, nor is he related to Ashwin. You're going with that. Okay? तो B वालों या तो अपना डिफेंड करो या तो C के अगेंस्ट बोलो. Either prove that you are right with B or prove that he's wrong with C. बोला पलटी मारना है. कहाँ पलटी मारना है? अब C पे. अब C पे कौन कौन है? 3 लोग, एक यहाँ, 2, एक ऑनलाइन, 2 यहाँ. ओके. एंड अभी भी B पे कौन है? वो क्यों B पे है? एक छत पूछ रही हूँ। बिल्कुल पूछो. 498A says कि domestic violence, correct? But does it say कि I want to look at the passage. मतलब does it say कि has to be the husband or relative of the हाँ. Again, वो relative को नहीं था, not the relative. पैसेज पे जाना है? बिल्कुल जाएंगे पैसेज पे. हाँ, see. अब रिलेटिव ऑफ हस्बैंड मतलब जो हस्बैंड को जानता है वैसा ही फिर से हम मैंने रिलेशंस का पूरा इसीलिए लेक्चर, कोई मेरे को कभी पूछना है ना सर एनालिटिकल रीजनिंग क्यों करवाते हो, एनालिटिकल रीजनिंग में रिलेशंस का एक्सरसाइज क्यों करवाते हो, क्लैट में थोड़ी आता है. रिलेशंस करवाते वक्त मैंने स्पेसिफाई किया हुआ रिलेटिव कौन होता है. तेरे को तो ऐसे जूते लेके मारूंगा अगर तूने बोला तूने नहीं किया. मैंने मिनिमम 2 बार तो करवाया, एक और तू दोनों में एब्सेंट रहे तो हेल ऑफ अ कोइंसिडेंस. A is the sister of B, B is the brother of C. नहीं करवाया. हाँ करवाएगा बट से एक बार एक मैच करवा Who's a relative? फैमिली Who's a relative? Connected not with the blood but connected with फैमिली family members So who is a family member? who's connected to you by blood. For एक्सेप्शन लाइफ और That's not an exception. That's not an exception. अरे अच्छा लाइक वो Because there are 2 types of relatives. हाँ One is relative by blood. One is relative by marriage. या तो तुम्हारा ब्लड रिलेटिव है या तो लीगल रिलेटिव है, सोशल लीगल रिलेटिव है. राइट. उसको एक्सेप्शन नहीं बोलते क्योंकि लिटरली हाफ दी फैमिली आफ्टर मैरिज इज रिलेटेड टू बाय ब्लड. अभी तुम्हारे लिए मोस्टली ब्लड रिलेटिव्स हैं, बट मेरे लिए तो बहुत it's literally double the size, right? So I cannot say exception. No, blood relative. So the person either has to be related to you by blood or there has to be a marriage between you. Now in this case, who is Rakesh? friend Friend कौन होता है? friend Friend होता है. रिश्तेदारों में नहीं आता है, चाहे जितना भी चाहिता क्यों ना हो. So and 498A was clearly meant for the husband or the relative. So in this case, my answer has to be C. बड़े जोर से मेजॉरिटी ऑप्शन बी के लिए आया था. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यू आर थिंकिंग हाय हाय लड़की के साथ अत्याचार हुआ केस होना चाहिए. बट मेनी न्यूबी लॉयर्स हैव अ प्रॉब्लम एंड दे डोंट अंडरस्टैंड हमारे केस को उन्होंने डिसमिस क्यों कर दिया है.
बिकॉज दे आर फ्रेम्ड दी रॉन्ग चार्जेस. गलत चार्ज आप फ्रेम करोगे तो केस डिसमिस हो जाता है. उस पर करो केस, बट ये सेक्शन में केस नहीं कर सकते. दिस सेक्शन इज ओनली फॉर दी husband or relatives. So you have to take everything into account. Clear, Che? Okay. Moving on. Now, frustrated and upset with her marriage, Ashima applies for and is granted a divorce from Ashwin in November 2020. Now, since she and Ashwin had been friends for many years before they got married, she stays in touch with him. She moves into her own apartment and starts going to office regularly at a new job. Ashwin is very upset at this and starts treating Ashima very cruelly. So Ashima again claims that Ashwin has committed an offense under section 498A of the IPC. Is she right? No, she is no longer married to Ashwin. 498A के लिए पहला कंडीशन क्या चेक करना है? हस्बैंड होना चाहिए, रिश्तेदार होना चाहिए. यहाँ पे डिवोर्स हो चुका है. Once you are divorced, are you a husband, wife or a family member? No, you are not. उसके बाद जो भी होगा, will it fall under 498A? नहीं. So yes के दोनों ऑप्शन तो उड़ गए. And no because he was upset is a stupid option. So the reasonable legal opinion that you can give has to be that she's not right. Why? Because she's no longer married. Okay. Now assume that the government passes a new law in January 21 called Protection of Rights of Married Women Act 2021, POMBA, according to which asking a married woman to take care of household chores would be an offense. The POMBA also provides that if a man commits such an offense, he would have to pay compensation to the woman. The POMBA even applies to actions that were committed any time in the 3 years prior to the new law coming into force, and even if the man and women involved in the matter were no longer married. Now, upon hearing this new law, Ashima once again alleges that Ashwin has committed an offense under Section 498A of IPC and claims compensation under POMBA for his action. Is she right and will she succeed? Huh? Huh? You would be surprised at how many people are like this, litigious and harassing people. क्योंकि काम धंधा नहीं है. And it's not unheard of. Huh? Misuse of law, especially domestic laws. Very, very difficult. Huh? Huh? She will get compensation. You're going with C. C says Ashima will get compensation under POMBA and she's also right about Ashwin committing an offense under Section 498A. कौन सा? B for Bombay. Ashima will get compensation under POMBA but not right about Ashwin committing offense under 498A. B for Bombay के लिए कौन कौन है? Compensation मिलेगा, 498A नहीं है. B for Bombay के लिए. Okay, and C. Compensation मिलेगा, 498A पे होगा. Okay. B क्यों है भाई? So one thing is agreed कि everybody agrees कि POMBA के अंदर compensation तो मिलेगा. Okay. 498A का इश्यू है. Okay. 498A क्यों है? भाई साहब. भाई साहब तू भाई साहब है. Unless you identify, please tell me your genders, pronouns. नहीं हाँ तो I'm saying नहीं क्यों नहीं है 498. हाँ तू बोल रहा 498A नहीं है क्योंकि B. इसलिए पूछ रहा हूँ क्यों नहीं है. नहीं मतलब 490 ये भूमा है वो अलग लॉ है ना पूरा. तो 490 जो ए जो है वो तो सेम ही है, तो उसके हिसाब से तो कौन है अश्विन ने कुछ नहीं किया. उसने चार क्वेश्चन में तो देखते तो उसने चारा की क्रुएल्टी हुआ. हैं? Ashwin has committed Ashwin is very upset at this and starts treating very cruelly. And this states he even he is no longer in husband. वो कोमा में आया था कि एग्जैक्टली बात बोल रहा हूं. कोमा तो है लेकिन 498 में नहीं है. 498 तो होगा लेकिन cruelty तो हुई है ना. इसका आंसर क्या है?
नो no longer married. तो उसके बाद तो उसके हमने 498 के जितने क्वेश्चंस के सबका आंसर नो ही कि क्रुएल्टी नहीं तो यहाँ पे बोल रही है, यहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये वाले क्वेश्चन में नहीं है, क्यों नहीं है? दूसरा क्यों तो अगले वाले में क्यों है? वो हाँ जो अलग है। पोम्बा कहता है तुम्हारा मैरिज इवन इफ इट इज डिवोर्स, 498 नहीं। पोम्बा है 498 है तो, लेकिन मैरिज के लिए लगेगा ना। पोम्बा कहता है कि अगर तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है तो भी शादी के 3 साल, आई मीन लॉ के 3 साल पहले तक भी ये वैलिड है, राइट? एंड डिवोर्स होगा तो भी वैलिड है। तो इसमें अश्विन एंड द फीमेल दे आर डिवोर्स, बट पोम्बा अप्लाइज। सो पोम्बा के अंदर तो इट इज अ वैलिड थिंग, बट 498 कहां से अप्लाई होगा? 498 में कोई चेंज नहीं हुआ है, एंड 498 रिक्वायर्स यू टू बी मैरिड, and at this point of time they are not. So although she will get compensation under pomba, 498 still does not apply. So B has to be my answer. Correct? Your own answer would be contradicting the previous one. Cannot. Law has to be consistent. Okay. Now assume that in March 21 the government changes section 498A of IPC. The effect of this change is that asking a married woman to do household chore, even for their own family, by herself, would be considered cruelty and therefore an offense under the section. Now, someday after the change comes into effect, Shamita, Ashima's friend at work, tells her that her husband has been forcing her to do all the household work by herself. Ashima tells Shamita that her husband's actions would amount to an offense under 498A of IPC, even though Ashima herself has been unsuccessful in having Ashwin convicted under that section in the past. Is Ashima's advice to Shamita correct? First of all, why do you laugh? इसके वापस वो आशीष Do you think domestic violence and 498A is funny? Then you should look at some of the horror stories which exist in law. Both where 498A was correctly applied and where 498A has been abused. In many cases, there has been clear-cut cruelty, and there have been cases where it has been wrongly used by the female. Either way, 498 is not a joke. A says yes. Why? Since 498 has now been changed, Shamita's husband's action would now be an offense under the changed section. We're going with that. Any other option? Ashima को तो कुछ नहीं हो सकता. Why? Because when she had the problem, 498A was not applicable. But now 498A says that even if a married woman is asked to do household chores, even for their own family, it is an offense. And now, when the incident happened with Shamita, did the law exist? Yes. So, with a different law, there has to be a different outcome. So, Ashima telling Shamita that you can fight under 498A is correct advice. B नहीं हो सकता. Just because the one was unsuccessful does not mean it has to be, because the law is not same. C, since the passing of protection, पोम्बा की तो बात ही नहीं है इसके अंदर, वो तो प्रीवियस क्वेश्चन में था, पोम्बा का तो है नहीं रेलेवेंस यहाँ पे. एंड फाइन, सिंस आशिमा इज ओनली फ्रेंड, ओनली मैरिड वुमन हरसेल्फ, नो, तो आशिमा तो एडवाइस दे रहे, तू फाइल कर. डी इज आउट. द ओनली रीजनेबल ऑप्शन करेक्टली हैज टू बी ए. सर मेरे को डाउट पूछा. सर आशीमा वापस ये नए लोग आने के बाद वापस उस पे केस करे तो हाँ. वैलिड नहीं होगा. So you tell me one thing. What is the time which is taken into consideration? The time of the commission of the act or something else? कमीशन हो गया. So what matters? जब आपने एक act commit किया है, उस time पे क्या existing law था? That is the only thing which matters, right? There is something called ex post facto. Ex post facto means after the fact. So laws usually are not ex post facto, which means once the act has been committed, if a law is created, then the law cannot have an effect on a fact which occurred previously, except when it is established within the law itself. जैसे पोम्बा का उन्होंने डेफिनेशन दिया था कि लॉ आने के 3 साल पहले तक के भी केसेस पे ये वैलिड होगा. But unless that is specified in the law itself, laws will only be applicable to incidents which occurred after the establishment of the law. So in this case,
Did the law exist when the incident took place? No, so it does not matter. Even if she files a case, double jeopardy will stop her from doing anything. Okay, next one. Right? Any questions, any doubts, any clarifications? Okay. Parliament passed the Criminal Procedure Identification Act in March 22. That was the name of the act. Now, the legislation enables police and central investigation agencies to collect, store, and analyze measurement of arrested person. किसी को अरेस्ट करते हैं तो पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है. इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मतलब क्या? सीआईडी, सीबीआई, ये सब. राइट. तो अगर किसी को आप अरेस्ट करते हो तो उसका आप कोई भी जो मेजरमेंट है उसको कलेक्ट कर सकते हो, ले सकते हो, अपने पास रख सकते हो और उस पर एनालिसिस कर सकते हो. नाउ, अनलेस रूल्स आर नोटिफाइड, एक्ट कैनॉट बी इंप्लीमेंटेड और कम इनटू फोर्स. रूल को बना तो दिया, लेकिन इस रूल को आपको ऑफिशियली नोटिफाई करना पड़ता है. द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर इट नोटिफाइज रूल्स कैन यूज दैट लॉ. लॉ बना के जब तक नोटिफाई नहीं होता है तब तक वो लॉ यूज नहीं किया जा सकता. So, on September 1922, the Ministry of Home Affairs (MHA) notified the rules under the Act. तो उस डेट को रूल्स भी नोटिफाई कर दिया है. Now, what are the rules? It says the Act empowers a magistrate to direct any person to give measurement to the police, which till now was reserved for convicts and those involved in heinous crimes. अभी तक मेजरमेंट किसका ले सकते थे? या तो जिसको कन्विक्ट कर दिया, जिसको सजा मिल चुकी है, या तो किसी ने कोई घोर अपराध किया है, हीनस क्राइम, उन लोगों का मेजरमेंट ले सकते थे. बट अब मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे किसी भी व्यक्ति का मेजरमेंट लिया जा सकता है. नाउ, it also enables police personnel of the rank of head constable or above to take measurement of any person who resists or refuses to give measurement when ordered to do so by a magistrate. मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे कोई बंदा अगर अपनी मेजरमेंट देने से मना करता है
तो हेड कांस्टेबल या उससे ऊंचे पोस्ट का कोई पुलिस का बंदा ये मेजरमेंट ले सकता है ना. एज पर द रूल्स मेजरमेंट का मतलब क्या है? एज पर द रूल मेजरमेंट मीन्स फिंगर इंप्रेशन, फिगर के निशान, पाम प्रिंट हथेली के निशान, फुटप्रिंट पांव के निशान, फोटोग्राफ्स, आइरिस एंड रेटिना स्कैन आपके आंख का जो मेजरमेंट है वो, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स, राइट. व्हाट कुड बायोलॉजिकल सैंपल मीन? So आपकी थूक, spit, hair, all skin sample, these could be biological samples, and their analysis. Behavioral attributes. Behavioral attributes यानी क्या? आपका सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, ये सारी चीजों को मेजरमेंट के अंदर काउंट किया जाएगा. Now, however, the rules state that measurements of those detained under preventive sections of the CRPC shall not be taken unless such person is at the time charged or under arrest in connection with any other offense punishable under any other law. इसका मतलब क्या है? What is meant by preventive sections? Now, कुछ ऐसे sections हैं आईपीसी के जो अलाउ करती है पुलिस को कुछ लोगों को इस चीज के लिए पकड़ने के लिए कि हो सकता है कि ये बंदा फ्यूचर में पंगा करे. एंड इट हैपेंस. फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर देर इज लेट अस से सम कम्युनल टेंशन, राइट, अगर लगता है कि राइट्स होने के फुल चांसेस हैं, तो जिन जिन लोगों पे उनको प्योर शक है, उनको शक है कि ये बंदे राइट करने वाले हैं, उनको वो पकड़ के रख सकती है जब तक वो थ्रेट खत्म नहीं होता. उन्होंने एक्चुअली कुछ नहीं किया, लेकिन ताकि वो ना करे उसको प्रिवेंटिवली पकड़ के रख सकती है कि क्योंकि पास्ट में इन लोगों ने दंगे किए हैं, तो ताकि इस बार ना करें हम उनको पकड़ के रखेंगे ना. प्रिवेंटिव सेक्शन के अंदर पकड़े हुए बंदे का आप मेजरमेंट तभी ले सकते हो अगर वो ऑलरेडी किसी और केस के लिए भी वांटेड है या उसमें कोई दूसरा भी केस चल रहा है, तो उसका मेजर ले सकते हो. लेकिन सिर्फ प्रिवेंटिव सेक्शन के अंडर अगर उसको पकड़ा गया है तो उसका मेजरमेंट नहीं होगा. Now, measurements can also be taken under the rule if a person has been ordered to give security for his good behavior for maintaining peace under section 117 of CRPC for a proceeding under that section. अगर secure to give a security means जामीन देना. कुछ लोगों को पकड़ के पुलिस ने बोला होगा या लॉ ने कहा है कि तू पंगा नहीं करेगा, इस चीज की सिक्योरिटी दे हमें, राइट. या तो उसको पकड़ के जेल में रख सकते हैं या तो बोल सकते हैं कि तू सिक्योरिटी दे, कि अगर तूने कुछ गड़बड़ किया तो पकड़ेंगे. तो ऐसे लोगों का भी, जिनको अच्छे बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी पे बाहर रखा गया है, उनका भी मेजरमेंट लिया जा सकता है. समझ में आया? पक्का? एनी क्वेश्चंस? Okay, now let's take a look at the questions then. Bhargesh is arrested by police on April 11, 22 on suspicion of having committed a series of minor theft. During their investigation, the police find some fingerprints at the crime scene, and on April 12th, 22, they tell Bhargesh that he must provide his finger impressions to them so that they can check whether they match the fingerprint from the crime scene. When Bhargesh refuses, the police tell him that he has no choice but to provide measurements as the act has been passed by the parliament the previous month. Was Bhargesh bound to provide his finger impressions under the act? Go to the passage. कौन सा? ए. क्यों? because like उसके crime छोटा मोटा एक तो प्लस उसके ऊपर एक वो प्रिवेंटिव है, like शक है ना उसके, उसने कन्विक्ट थोड़ी हुई, एंड प्लस उसका वो मैजिस्ट्रेट का वो भी नहीं था ऑर्डर.
अदर्स, ए को कौन सपोर्ट कर रहा है? तेरे अलावा कोई भी नहीं कर रहा है ए को सपोर्ट। बाकी जनता? जो उसको कन्विक्ट नहीं किया गया है इसके लिए नहीं कर सकते, बट कौन कहता है कि सिर्फ कन्विक्ट्स का ही लेना चाहिए? प्रीवियसली सिर्फ कन्विक्ट एंड ग्रीवियस क्राइम्स के लिए था। अच्छा ओके मैं उसका हाँ हाँ, सितंबर 1922 में प्रॉपर अथॉरिटी के साथ ही एक्ट पास हुआ है। नहीं, मार्च में पास हुआ है। पर तब उसके बाद लिखा है until the rules are notified and act cannot be हाँ, तो सितंबर में वो पास नहीं हुआ है, पास तो मार्च में हो चुका है, नोटिफिकेशन सितंबर में हुआ है। I'm just correcting your words. Your line of thought is right. I'm just correcting your words. You said एक्ट सितंबर में पास हुआ है, एक्ट मार्च में पास हो चुका है, लेकिन नोटिफाई सितंबर में हुआ है। सितंबर 19 और उसके बाद ये अप्रैल में। सो यू कैनॉट से दैट लॉ पास का वर्ड यूज मत करो, लॉ के नोटिफिकेशन का वर्ड यूज करो, राइट? मार्च में लॉ पास तो हो चुका है, लेकिन इंप्लीमेंट तभी किया जा सकता है जब रूल्स नोटिफाई हो, एंड रूल्स का नोटिफिकेशन कब हुआ था? सितंबर में, लेकिन एक्ट कब हुआ था? सितंबर से पहले अप्रैल में हो चुका है। सो कैन दिस पर्टिकुलर लॉ बी यूज्ड इन दिस केस? नो, सितंबर तक तो यूज ही नहीं कर सकते। So my best answer in this case is not because of the arrest or conviction, but simply because the law cannot be used. Notification नहीं हुआ है. So my best answer is C. The rules have not been notified, so he's not bound to provide anything. Correct? Procedural importance है यहाँ पे. हाँ. मतलब पास हो गया था मार्च में। Yes. और जब तक नोटिफिकेशन आया, it cannot implement। No. और 19 और उसके बाद से लॉ चालू। जब से नोटिफिकेशन हुआ है रूल्स का, उसके बाद से ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू समथिंग, अभी सबसे बड़ा लॉ रिलेटेड स्टफ पार्लियामेंट में कौन सा हुआ है? Women's bill. Has the bill been passed? Yes, but has it been implemented? No. Why not? Because the rules have not been notified yet. Do you understand? The law has been passed, but it cannot be used. Why? Because the rules have not been notified yet. Okay. Now, Bhargesh is later released by police because they are unable to find enough evidence to make a strong case against him. Now, on October 5th, 22, the police receive a complaint alleging that Bhargesh has beaten up his neighbor and caused the neighbor severe injuries. They ask the local magistrate to issue an order directing Bhargesh to provide his blood samples, so that they can match them against some bloodstains that were found on the neighbor's clothes. The magistrate issues the order, but Bhargesh refuses to provide the blood samples. Is Bhargesh bound to provide his blood sample to the police under the Act? चारों ऑप्शन यस है, यानी चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। भार्गेश को देना तो पड़ेगा, बट अंडर व्हाट रीजन? पहला वाला, सिंस द क्राइम दैट भार्गेश वाज अक्यूज्ड ऑफ वाज वेरी सीरियस, वो तो प्रीवियस कंडीशन है, करंट कंडीशन में तो नहीं आता है। सेकंड, यस सिंस द मैजिस्ट्रेट हैज पास्ड एन ऑर्डर, लॉ यही बोलता है मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करता है तो देना पड़ेगा, बी हो सकता है। सी, यस सिंस ही हैज ऑलरेडी बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद अनदर क्राइम, डज नॉट मैटर। फोर्थ, सिंस द पुलिस नीडेड द ब्लड सैंपल टू वेट, पुलिस की जरूरत पे लॉ नहीं चलता है, लॉ के नियम से लॉ चलता है। सो द ओनली ऑप्शन विच कैन बी यूज्ड इन दिस केस हैज टू बी बी। पक्का? ओके। नाउ ऑन October 15, 2022, the police detained Bhargesh under a preventive section of CRPC since they believed he had plans to disturb the public peace during a festival day. Then they tell Bhargesh he must provide his measurements to them for their records. Bhargesh refuses again. Is Bhargesh bound to provide his photograph to the police under the Act? D for Delhi. C. 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 So everybody says yes, but some people think that because he's detained under preventive section, and you think that because there's a high likelihood you would disturb public peace.
Argue. Yes, go ahead. तो उसकी प्रोबेबिलिटी इसमें थोड़ी हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि क्या? वो करेगा ऐसा, वो प्रिवेंट करने के लिए कि उसके लाइवलीहुड से क्या वो करेगा कि नहीं करने के If section says that if there are chances कि वो करेगा because of the past action. लिए प्रिवेंट इसका वही है. So what's the answer? कि C. That yes, because he has been detained under preventive section of CRPC. ये सब पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनोगे लेकिन एक भी डिफेंस लॉयर नहीं बनेगा. Let's see what the law says. Though blah 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 blah. Okay, the rules state that measurements of those detained under preventive section of the CRPC shall not be taken unless such person is at that time charged or under arrest in connection with any other offense punishable under any other law. प्रिवेंटिव सेक्शन में अगर आपको अंदर लिया है तो तब तक आपसे मेजरमेंट नहीं लिया जा सकता जब तक आप किसी दूसरे लॉ के अंडर अरेस्ट नहीं हुए हो. अब भार्गेश भाई प्रिवेंटिव के अंदर तो यहां पे आए हैं. व्हाट इज ही अरेस्टेड अंडर अदर देन प्रिवेंटिव? व्हाट हैज ही बीन चार्ज्ड विद अदर देन प्रिवेंटिव? इसको कनेक्ट कर सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन. करो. वो नहीं वो थेफ्ट के लिए तो अरेस्ट हुआ. अरेस्ट हुआ था? नहीं, कहां पे अरेस्ट हुआ है वो? कहां पे अरेस्ट हुआ है वो? सस्पिशन की वजह से मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके उन्होंने लिया है, अच्छा ओके. पर उसका अरेस्ट कहां पे हुआ है? सो सो chances उनको लगता है. सो तो भी नो ए. प्रिवेंटिवली उसको ले तो सकते हैं, उससे मेजरमेंट नहीं ले सकते आप. He has not been charged or under arrest in connection with any other offense, so he cannot be forced to give measurements under preventive arrest. उसको अरेस्ट किया है, उसको प्रिवेंटिवली कस्टडी में लिया जा सकता है, but can measurements be taken only if he is charged with something else? Has he been charged with something else? No. So preventive arrest, yes. Measurements, no, 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 not in this case. You're getting it? Even people detained under suspicion have rights. और ऐसे छोटे छोटे मामलों में ही डिफेंस लॉयर्स अपने मुवक्किल को छुड़ा ले जाते हैं, because the law is very clear on this. Did everybody get it? You have to be very very careful with understanding the law. Chalo. Now 2 days later the police obtain an order from magistrate directing Bhargesh to provide them the photograph. Now as Bhargesh continues to refuse to provide photograph, a regular police constable forces him to stand still and takes his photograph. Bhargesh files a case in the court claiming that the constable's actions violate the act. Will he succeed? B says yes, since only police personnel of the rank of head constable or above can take measurement of any person who resists or refuses to give measurement while ordering to do so by a magistrate. Correct? मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर तो है, बट जो रेजिस्ट करता है उसका कौन ले सकता है? ओनली अ पर्सन ऑफ हेड कांस्टेबल और अबव रैंक. हाउ डू वी नो दैट इट इज? बिकॉज रेगुलर पुलिस लैब, ऑब्वियसली रेगुलर हेड के ऊपर तो नहीं ही होगा. सो इवन इन दिस केस can this particular constable take the photo? Nope. So best option B. Easy था ये वाला. Okay, continuing. The police release Bhargesh, but to ensure that he does not disturb the public peace, they ask magistrate to issue an order under section 117 of CRPC directing Bhargesh to provide a security of 1 lakh for good behavior and to ensure he maintains peace, which the magistrate refuses. The police now tell Bhargesh he must provide them his iris and retina scan. Is Bhargesh required to do so?
लेकिन बात person has the order in order to be here. So, then Which one? D for Delhi. See, one is clear के security अगर आपसे डिमांड हुई हो अंडर अ कोर्ट ऑर्डर तो आपका स्कैन लिया जा सकता है. पुलिस ने तो कहा है कि सिक्योरिटी चाहिए, बट द मजिस्ट्रेट हैज रिफ्यूज्ड, व्हिच मींस टेक्निकली देयर इज नो सिक्योरिटी टेकन फ्रॉम हिम. एंड जब कोई सिक्योरिटी उससे लिया नहीं है, देन अंडर व्हाट अथॉरिटी कैन हिज फोटोग्राफ बी टेकन? नन. सो नो तो है, बट A says no, since a person against whom an order has been issued cannot be made to give measurement. No, if an order has been issued under this, then they can be made to give. Right? So A is contradictory, B C है नहीं. The only relevant option here is D. Magistrate का order नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती इस केस में. Clear? चलो next. Read? Understood? जब तक ये समझ में नहीं आएगा, क्या समझ में आया? चलो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड. उनका 10 days का पीरियड हाँ. एक्सपायरी और 15 हो गया. उतना समझ में आया कि कुछ तो बॉन्ड होता है और उसका पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना है और उसका एक्सपायरी पीरियड खरीदने का कोई बैंक से सिस्टम है. राइट. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इलेक्टोरल बॉन्ड. पहले अगर वो समझ में आ जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, देन मे बी ऑल ऑफ दिस विल मेक सेंस. तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? लेट अस से इंडिया में डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं. राइट. आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो तो
अगर आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो उस पार्टी से तो उनको पैसे देना चाहोगे? यस, नो? पीपल वांट टू गिव मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज, बट कैन एनी पर्सन गिव एनी अमाउंट ऑफ मनी टू एनी पॉलिटिकल पार्टी दैट दे वांट? इसमें पंगा है, राइट? इफ एनी अमाउंट कैन बी गिवन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड दो नंबरी में, तो बहुत प्रॉब्लम, पीपल माइट यूज इट इन अ रॉन्ग वे। जो मैं बहुत अमीर बंदा हूँ, मैं अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को करोड़ों का ब्लैक मनी दे देता हूँ। ब्लैक टू व्हाइट भी नहीं, मैं देता हूँ उनको, ब्लैक मनी नहीं देता हूँ, मेरे को ये दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो सरकार आ गई तो मैंने पैसे दिए हुए उनको, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, झोल बहुत कर सकता हूँ, राइट? सो वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग ऑल दिस इज द government has come up with something called electoral bond, which means what? Supposing you want to give X amount of money to your party, then now there's a limit how much a private person can give to the party. Now, supposing you want to give 20,000 rupees to ABC party, right? तो आप क्या करोगे? You will go to one of the banks who is allowed to sell electoral bonds, and you will purchase electoral bond from them and send it to the party, right? तो बैंक के पास पैसा गया, that means white money होगा, एंड वो बॉन्ड उस पार्टी को दिया जाएगा जिसके नाम पे आपने ये परचेज किया है, एंड वो पार्टी को भी अपने बैंक में उसको जमा करना पड़ेगा ताकि वो भी व्हाइट में रहे, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि उनको पता चले कि ये बॉन्ड किससे आया है, सो अनोनिमस हो गया, राइट? सो कैश में अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देते हो तो कैश का एक तो हिसाब नहीं देंगे और किसी भी चीज के लिए वो यूज किया जा सकता है। बट इफ यू डू इट थ्रू एन इलेक्टोरल बॉन्ड, one, there is a limit on how much money you can purchase, and second, all the money has to be in white because it can only be deposited in the bank to be used. So in one way you can track the money, करेक्ट? एंड सेकंड, इट कैन बी अनोनिमस, तो उनको पता नहीं चलेगा किसने ये दिया है, सो उसका भी वो करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। थोड़ा बहुत समझ में इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। चलो अब इसके रिलेटेड क्या है। नाउ द गवर्नमेंट हैज अमेंडेड, चेंज्ड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इन 2018. The Ministry of Finance on November 7, 2022 issued a notification for amending the scheme to provide an additional period of 15 days for their sale in the year of general election to the Legislative Assembly of any state or union territory with the legislature. तो पहले you cannot purchase it at any time. There was a specific time period कि इन्हीं दिनों में आप परचेज कर सकते थे। तो अब चेंज क्या है कि जिस साल किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के असेंबली का इलेक्शन होगा, उस साल में आपको एक्स्ट्रा 15 दिन मिलेंगे जब आप ये बॉन्ड परचेज कर पाओगे। पहले जो जितने डेज थे उससे 15 दिन और मिलेंगे जिस टाइम पीरियड के अंदर यू आर अलाउड टू परचेज द बॉन्ड। नाउ द बॉन्ड अंडर द स्कीम are usually made available for purchase by any person for a period of 10 days each in the month of January, April, July and October when specified by the union government. ऑर्डिनरीली आप सिर्फ इन 4 महीनों में परचेज कर सकते हो, जनवरी के 10 दिन, अप्रैल के 10 दिन, जुलाई के 10 दिन, अक्टूबर के 10 दिन। और कौन से 10 दिन ये गवर्नमेंट बताएगी, उन्हीं दिनों में आप ये बॉन्ड परचेज कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल आपको 15 दिन और मिलेंगे परचेज करने के लिए। पहले कितने डेज थे, मल्टीप्लाइड बाय 4, 40। अब कितने डेज हो गए। नाउ इट सेज the original scheme had provided for an additional period of 30 days as specified by the government in the year when the Lok Sabha elections are held, while the amendment adds another 15 days. अब originally और ordinary year 40 days, जिस साल लोकसभा इलेक्शन होगा उस दिन 30 days एक्स्ट्रा, और अभी का जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से जहां पे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होंगे उसमें और 15 दिन। Are you getting the amount of number of days on which you can purchase the bond? Okay. Now, since assembly election to various states and union territories are held every year, the amendment effectively means there will be 15 additional days annually during which the bond can be sold. लॉ के हिसाब से तो जिस साल में किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन होगा उसी साल एक्स्ट्रा 15 दिन मिलेंगे, बट हर साल किसी ना किसी स्टेट का तो इलेक्शन होता ही है, हर साल किसी ना किसी यूटी का तो इलेक्शन होता ही है। सो ऑन पेपर सिर्फ उसी साल में 15 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे जिस साल इलेक्शन होगा, बट प्रैक्टिकली हर साल वो 15 दिन एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं क्योंकि किसी ना किसी स्टेट में तो इलेक्शन होने वाला है ही। सो immediately after issuing the notification,
The union government also announced the sale of electoral bonds under the 23rd tranche from the authorized branches of State Bank of India. तो 2018 में ये नोटिफिकेशन किया और उसके बाद उन्होंने 23rd पार्ट ऑफ द सेल चालू किया, राइट? और कौन से बैंक से मिलेगा? SBI के कुछ कुछ authorized branches से. Now, the notification said that the sale of bond would take place through the 29 authorized branches of the said bank from November 9 to November 15, 2022. Okay, in particular 29 branches SBI के जो हैं उसमें 9 से 15 नवंबर तक ये सेल होगा. Like in the previous round of sale, the electoral bond shall be valid for 15 calendar days from the date of issue, and no payment shall be made to any payee political party if the bond is deposited after expiry of the validity period. मैंने बॉन्ड खरीदा, राइट? आज की तारीख में मैंने बॉन्ड खरीदा. टुडे इज द 30th of September and I give the bond to my favorite party, ABC party. मैंने आज दिया तो आज से 15 दिन तक के अंदर उनको अपने अकाउंट में जमा करना, राइट? आज के आज मैंने वो बॉन्ड उनको दिया और 15 दिन खत्म होने के बाद अगर वो बॉन्ड वो अकाउंट में डालते हैं तो पैसे नहीं मिलेंगे. दैट बॉन्ड इज फिनिश, पतेगी, ओवर, गॉन. सो जब उनके हाथ, जब से मैंने बॉन्ड इश्यू करवाया उसके 15 दिन के अंदर दे हैव टू गेट द मनी, दे हैव टू गेट इट रिडीम्ड, वरना वाउचर खत्म, कूपन खत्म. So, the electoral bond deposited by an eligible political party in its account shall be credited on the same day. जिस दिन आप पॉलिटिकल पार्टी हो, आपको मैंने बॉन्ड दे दिया है, वो बॉन्ड आप बैंक के पास लेके जाते हो, उसी के उसी दिन पैसे आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे. नॉर्मली चेक क्लियर करने में टाइम लगता है, राइट? 2 to 5 वर्किंग डेज कभी कभी लग जाता है, बट इलेक्टोरल बॉन्ड जिस दिन पार्टी अपने अकाउंट में डालेगी उसी दिन पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा. Clear on the timeline and other things, right? Technical details हैं, so let us see what the questions can be. Asad buys an electoral bond worth 1 lakh on November 9, 22 and plans to give the bond to the Popular People Party PPP, which he has been supporting for many years. Now, on November 10th, he must travel out of station on some urgent business and he only hands the bond over to a representative of the PPP on November 14th, 22. The PPP's representative deposits the bond in the party's account on November 16th, but the bank refuses to credit the bond to the party's account on the ground that it is no longer valid. Is the bank correct? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. और कोई पूछता है ना सर क्लैट में मैथ्स क्यों करते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. बेसिक एडिशन है. रूल क्या है? 15 दिन. बॉन्ड खरीदा कब? 9 + 15 इश्यू कब हुआ था? बैंक में कब डाला था? वैलिड है कि नहीं है? खत्म कहानी. सो इज द बैंक करेक्ट? आंसर इज नो. सो इट हैज टू बी ए और डी. बी एंड सी तो चेक भी नहीं करूंगा, लेकिन ए नो बिकॉज ही वाज अ लॉन्ग टाइम, राइट? लॉन्ग टाइम सपोर्टर का पैसा नहीं है क्या? बेकार रीजन है. तो डी नो. व्हाई? बिकॉज द बॉन्ड वाज वैलिड ऑन November 16th. हैज टू बी द ओनली पॉसिबल आंसर. क्लियरली हैज टू बी डी इन दिस केस. इजी. Which one? D for Delhi. It says no. Question क्या है? Assad claims that the government does not have the power to issue. Okay. Easy, right? You're saying no, since the changes to the electoral bond scheme 2018 provide that electoral bonds can be issued for an additional period of 15 days in years when there's an election to the legislative assembly of a state. Okay. क्वेश्चन में ये नहीं है. हाँ.
तो डी तो ऑटोमेटिक गलत ही है, क्यों? उसके स्टेट में ही नहीं है तो उनके स्टेट को गलत है। लेकिन कोई तो स्टेट में है ना, लिखा है ना सिंस इलेक्शन to legislative assembly of some states are scheduled for that year. हाँ मतलब सब स्टेट में वो तो नहीं है. Does the law say that it is valid only in the state where it is? Let's see what the law says. It says it issued a notification for amending the scheme to provide additional period of 15 days for sale in the year of general election to the legislative assembly of any state or UT within with legislature. The law never said it is valid only for the states where the election is. It says any state. And think about it. दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, राइट? बट आई एम अ सपोर्टर ऑफ आम आदमी पार्टी विच इज नॉट पावरफुल इन गुजरात बट वेरी पावरफुल इन दिल्ली, और मेरे को आम आदमी पार्टी को ही पैसे देने हैं गुजरात से, क्या मैं दिल्ली में पैसे नहीं भेज सकता? क्यों नहीं भेज सकता? Where does it say that you can only give bonds to parties in which you have an which where you can vote? ऐसा कोई restriction नहीं है ना. So and the law is also clear. कहीं पे भी हो रहा है तो 15 दिन का मिलेगा आपको. So there's absolutely nothing wrong in this. So Assad cannot technically do anything in this case. Correct? आंसर ये वाला क्वेश्चन था ना. So can he claim that he does not have the power to issue this? No. Because any state में होगा तो they can do it. Okay, so this is D. Now, on November 10, 22, Palak purchases an electoral bond from a branch of SBI and hands it over to a representative of PPP. Next day, PPP announces that it has changed its candidate for the upcoming election in Palak state. Upset at this news, she tells a PPP representative that she would like her bond back. The representative tells her bond has already been deposited and that the money has been credited to the party's account. Palak claims that since the period of validity of the bond has not expired, she has the right to get her bond back from the party. Is she right? यार दिन में कंफ्यूजन है दोनों में Oh, B says no, since the party has already deposited the bond and the money has been credited to the account. D, yes, since PPP changed the candidate, Palang no longer support the party. क्या confusion है? ऑलरेडी पैसे चले चले गए ना पॉलिटिकल पार्टी में के अकाउंट में, पर अगेन द कैंडिडेट हैज बीन चेंज. पलक में भी सपोर्टिंग तो उसके पहले वाला जो है उसको नहीं करती तो कैन शी हो गया, पर कैन शी टेक इट बैक? What does the law say? बोलो. कौन सा? ए के साथ कोई है, बी के साथ इन पार्शियली हो तो भी चलेगा, पार्शियली बी के साथ. सी के साथ कोई है, सी कहता है यस, सिंस पलक bought the bond with her own money and has the right to ask for it back. Okay, डी के साथ partially yes, since the PPG chain can Palak will no longer support the party. Okay, C क्यों? हाँ? उसका पैसा है तो वो वापस ले सकती है. According to which law? हाँ हाँ बोलना. भले उसके खुद के पैसे थे, पर वो कोई भी कैंडिडेट को दे और एक दिन पर्सन आए दूसरे दिन सेम का सेम कैंडिडेट उसको खुद के पैसे दो, ही कैन नॉट टेक इट बैक फॉर मतलब
फॉर एग्जाम्पल सेम का सेम कैंडिडेट ही रहा, बदला नहीं, हाँ शी पेड, उसने दे दिया रिप्रेजेंटेटिव ने, उसने डिपॉजिट भी कर दी, क्रेडिट भी हो गया, हाँ दूसरे दिन इसको लगा उसके खुद के पैसे हैं, उसको वापस चाहिए, हाँ, शी कैन नॉट टेक दैट मनी। तो फिर डी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? इसमें कैंडिडेट बदला। तो 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 उसका तो मन बदला ना, पार्टी थोड़ी बदली है। तो कैंडिडेट बदला। सो so what? According to the law, what is the refund policy? There is no refund policy anywhere. पत्ती गयू, खत्म, टाटा बाय बाय सी यू। पैसे अकाउंट में चले गए तो चले गए, कुछ नहीं कर सकते तुम, बिकॉज पूरे लॉ में कहीं पे भी रिफंड की बात नहीं है। क्लियरली ये कहता है कि पैसा उसी जिस दिन पार्टी ने अपने अकाउंट में बॉन्ड डाला, पैसा उनको मिल जाएगा। उसके बाद कहीं पे भी कुछ बात होती है रिफंड की, बस रात गई बात गई। सो द ओनली रीजनेबल आंसर इज no, since the party has already deposited the bond and money has been credited. She can ask for the bond back if it was not credited, but not legally. The party has the right to say no. Or she can, I don't know, there is nothing given, but stop check नाम की चीज होती है for checks. I don't know whether you know this. First of all, do you know what a check is? हाँ, क्योंकि आजकल जमाना चला गया चेक्स का। बट आप चेक किसी को लिख के देते हो और आपको लगता है कि ये चेक से मुझे पेमेंट नहीं करना है, तो आप बैंक को स्टॉप चेक नोटिस इशू कर सकते हो। चेक नंबर दे दो और बोल दो कि ये पर्टिकुलर नंबर का चेक मत ऑनर करना। सो दैट्स कॉल्ड अ स्टॉप चेक। बट ऐसा कोई भी यहाँ पे अपने पास है नहीं, राइट? सो हियर द रीजनेबल थिंग इज मनी क्रेडिट होने के बाद तो कोई भी चीज स्टॉप नहीं हो सकती, रिवर्स कभी नहीं हो सकता। सो हियर द ओनली रीजनेबल आंसर डेफिनेटली इज बी। एक बार पैसा क्रेडिट हो गया फिर खत्म, कुछ नहीं कर सकते। Okay. Now, on November 15th, 22, the government issues another notification announcing that from that date onwards, only political parties that have received at least 1% of the vote polled in the last election to Lok Sabha or the last election to the Legislative Assembly of a state would be eligible to receive and deposit electoral bonds. Now, in the sale of the 24th tranche of electoral bonds, Palak decides to give the electoral bonds she has purchased to the newly formed More Popular People's Party, MPPP, which is likely to win the first election it would be contesting in July 23. Is the MPPP eligible to receive the electoral bonds? कौन सा? इसमें बाकी जनता इतना सोच क्यों रही है? रूल क्या है? मिनिमम 1% वोट पिछले इलेक्शन में मिलना चाहिए। एमपीपीपी को 1% वोट मिला है पिछले इलेक्शन में। हाँ, अबे बनाया है, पैदा भी हुआ है, पैदा भी हुआ है, पिछले इलेक्शन में लड़ा कहां से वो? It is a newly formed party. How is it possible that it has fought in the previous election? Which means logically it cannot be eligible. So yes तो हो नहीं सकता. C does not fulfill the eligibility criteria announced on 15 November. D does not fill the criteria. 7 नंबर का कौन सा नोटिफिकेशन है? कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है. तो बेस्ट आंसर, ओनली आंसर हैज टू बी C. करेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो कहां कंफ्यूजन है? न्यूली फॉर्म्ड पार्टी है, न्यूली फॉर्म पार्टी का कभी पिछला रिकॉर्ड होता ही नहीं है. चलो. Now, Abraham, who lives in a different state from Assad, purchased an electoral bond in the sale of 23rd tranche. He decided to give the electoral bond to PPP, even though the PPP is only active in Assad state. Now, when PPP representative goes to the authorized branch of the State Bank of India to deposit the electoral bond on December 5th, however, the bank refuses to credit the money to the PPP account. Which of the following would be the most valid reason for the bank to refuse to credit the money to the party's account?
कब खरीदा उसका नेम नहीं दिया, लाइक 23rd ट्रांच के दौरान दिया है। तो 23rd ट्रांच का ऊपर उसका डेट, हाँ प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन ही फैक्ट्स में दिया हुआ है। हाँ तो एक्सपायर 23rd tranche was from 9th to 15th November and the number of days it is valid is 15. So 15 नवंबर से मैक्सिमम कब तक वैलिड होगा वो 30th। ये भाई साहब ने कब जाके किया सब, दिसंबर 5th। फर्स्ट तक भी मैं बोलता 15 होगा कि नहीं होगा, बट 5th दिसंबर में तो कोई शक ही नहीं है, 15 प्लस डेज तो आराम से हो गए हैं। सो हैज टू बी नो लॉन्गर वैलिड। बी तो नहीं हो सकता, एक्ट स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलिजिबल टू रिसीव से फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट नो, एंड ओनली डिपॉजिट इन अ बैंक लोकेटेड इन द स्टेट, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। सिंपलेस्ट रीजन, डेट खत्म हो चुका है, एक्सपायरी, टाटा बाय बाय। करेक्ट, चलो राइट, राइट, अंडरस्टूड। एनी एक्सप्लेनेशन, एनीवन? बेसिकली क्या बोलता है, Twitter's lawyer on October 27th said before the Karnataka High Court that union government orders to block certain Twitter handle and post must contain reason for the same that can be communicated to user of the microblogging site. गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया है ट्विटर के कुछ अकाउंट को। ट्विटर क्या बोलता है कि जो भी ऑर्डर है उसके अंदर आप बताओ क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, क्यों? He says that this applies to all the blocking orders sent to social media platform. The lawyer representing Twitter said that the reason for the blocking order must be provided to users so that they can determine whether or not they want to challenge the order. अगर आप ब्लॉक करने का ऑर्डर देते हो तो हम आपके ऑर्डर को चैलेंज करें ना, तो अगर आप बताओ कि क्यों ब्लॉक करना चाहिए तो हम चैलेंज कर सकते हैं। बिना कारण के अगर आप ब्लॉक करने को कहोगे तो हम आप चैलेंज ही कैसे करेंगे, पता ही नहीं आपने क्यों ब्लॉक किया है, तो किस बेसिस पे हम चैलेंज कर सकते हैं? सो ये बताओ क्यों ब्लॉक किया है। So challenging the blocking orders, Twitter's July 5 petition contended that several blocking orders demonstrate excessive use of powers and are disproportionate. मतलब कई ऑर्डर आपके हैं वो जरूरत से ज्यादा है, या तो आपके अथॉरिटी में है ही नहीं। Such orders can only be issued by the union government and not the state government, he said, which increases the danger of such abuse. बोलते और ऐसा ऑर्डर सबसे पहले तो यूनियन गवर्नमेंट दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट दे नहीं सकता है। Twitter also claimed that Ministry of Electronics and Information Technology has sent it a letter threatening consequences for failing to comply with the blocking order, such as criminal proceedings against the company's chief compliance officer
and stripping away of Twitter's safe harbor immunity otherwise available to social media platform. उन्होंने कहा जो आईटी मिनिस्ट्री उसने हमको धमकी भी दी है कि अगर हमने आपके ऑर्डर फॉलो नहीं किए तो आप पे हमारे पे क्रिमिनल केस करोगे. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सेफ हार्बर इम्यूनिटी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मिलता है. तो जो सेफ हार्बर इम्यूनिटी प्रोटेक्शन है वो भी हमसे छीन लोगे, ऐसी धमकी हमको आईटी वाले दे रहे हैं ना. होता क्या है, the government has the power to strip away such safe harbor immunity under the IT Act. So safe harbor means some protection is given, लेकिन government has the authority के protection आपसे छीन ले. Further, in a previous hearing, Twitter's lawyer said that the company was asked to block entire account, though Section 69A of the IT Act does not permit blocking of the whole account. It only permits blocking of information or particular tweet or post. It argued that Union government's direction to block whole account will affect his business, adding that several prominent persons have their account on the platform. मतलब सरकार बोल रही है पूरे का पूरा अकाउंट डिलीट कर दो, लेकिन जो आईटी एक्ट है वो कहता है कि अगर कोई स्पेसिफिक पोस्ट है, ट्वीट है, तो उसको डिलीट करो. पूरे का पूरा अकाउंट डिलीट करने का आप बोल ही नहीं सकते हमको. दैट्स द आर्गुमेंट ऑफ ट्विटर्स लॉ. करेक्ट. चलो क्वेश्चन फर्स्ट वन. Sunil is a high-ranking officer of the union government. While scrolling through his timeline on social media platform, he notices some post by Sachin, private businessman, which he finds objectionable. He sends an order to Unreal, the company that owns the social media platform, that the post must be blocked as they may bring disrepute to India. Unreal claims that Sunil has not provided a clear, detailed reason for blocking the post, so the order is not valid. Is Unreal right? हाँ जी. C. क्यों? C says, is the order is Unreal right? They're saying yes because Sunil's reasons are vague and he should have provided more detail. You feel that Sunil's reason is vague? If you're who else says C? Why? You think the reason given by him is vague? He only finds it objective मतलब जो पोस्ट उसने देखी है उसको लॉक कराएगी. He only thinks that it is not because that society may do that. सिर्फ उसका ऐसा opinion ये सबका नहीं होता. Not sure, but maybe more detail provide करनी चाहिए हमारे को. If because of this and this design. So he has not given a clear reason. You feel, has he given a reason? That will be blocked because it may bring. It may bring disrepute to India. So is that not a clear reason? What is vague about it? First of all, can he give such an order? Why not? Union government can. He's a high-ranking officer of the union government, so technically he can. Second, clear reason must be provided. He cannot block the account. Account cannot be blocked, post can be. Is he asking for blocking of the account? No, for the post. Reason has to be clear. Is this reason clear? What doubt you have in the reason? Bringing disrepute to the country. It's a clear reason. If he says it is bad for the country, but bringing disrepute to the country, clear defamation hai. So in that case, what reason should you have? None. So my best option is either A or B. A, you cannot, just because he found it objectionable. No. But has he provided a reason? Yes. So my best option in this case is B for Bombay. Clear on that? Okay. Now, some days later, Sunil notices another post from Sachin on Unreal social media platform
This post contains some highly sensitive information about the country's defense policies. He issues an order to Unreal that the post must be blocked since it divulges government's confidential information. The order also says that Unreal should not let anyone know about the blocking order or that the post was ordered to be deleted since it relates to secret government information. Unreal claims that the order is invalid. Is Unreal right? B or D man. B says no since Sulis has provided reason to Unreal for ordering that the post be blocked. D no since the post divulged confidential government information. We have seen three things which we must check. One, does Sunil have the authority to do so? Okay. Second, क्या था अपना पोस्ट या पूरा अकाउंट पोस्ट सो वैलिड है. थर्ड, क्लियर रीजन मस्ट बी गिवन. किसको? अनरियल को बोल रहा है ब्लॉक करो पोस्ट. जिसका पोस्ट ब्लॉक किया है वो ऑब्जेक्ट करेगा या अनरियल ऑब्जेक्ट करेगा? मेरा पोस्ट अगर ब्लॉक कर दिया तो मैं ऑब्जेक्ट करूंगा. तो ऑब्जेक्ट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए ना मेरा पोस्ट ब्लॉक्ड क्यों है. एंड अनरियल को क्या कहा गया है? किसी को बोलना था. किसी को बताओ मत ये ब्लॉकिंग ऑर्डर क्यों है. मेरा पोस्ट ब्लॉक कर दिया है और मुझे ही नहीं पता क्यों ब्लॉक किया है. हाउ कैन आई ऑब्जेक्ट? The person who is getting blocked must know the reason. Correct? So it has to be either A or C. C तो नहीं हो सकता. Frequency की कोई बात नहीं है. So best is Unreal right? Yes. Why? Since it did not provide any reason that could be communicated to the user of the social media platform. जिसका पोस्ट ब्लॉक हो रहा है उसको भी तो रीजन बताओ क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यूजर करने वाला है. So my answer in this case is actually A. Now Sunil sends Unreal a third blocking order. Unreal claims that this order too was invalid. Upset with Unreal for claiming that all his blocking orders were invalid, Sunil sends them a letter in which he says, if you do not comply with my blocking order, then I'll be forced to initiate criminal proceedings against you and cancel your safe harbor immunity. Unreal claims that Sunil has broken the law by making these statements in the letter. Is Unreal right? Simple. Can criminal proceedings be started? Can safe harbor be taken away? Why not? यार पैसेज पे जाओ. 79(1). Note that the government has the power to strip away such safe harbor immunity. So technically, does he have the authority to do whatever he's saying? Yes. So is Unreal right then? No. So B तो नहीं हो सकता because he has issued blocking order in the past. They should have complied without questioning. नहीं. But the answer is D. They are not right. Why? Because the IT Act does not forbid Sunil from doing so. IT Act के तहत Sunil can do it. So D. Now, complying with a fourth blocking order that they received from Sunil, Unreal blocks Sachin's account since his posts were seen as increasingly objectionable by the government. Sachin asks Unreal to share a reason for the blocking order, which they do. Yet Sachin claims that the blocking order is invalid. Is he right? ये तो भी straightforward and simple होना चाहिए. हैं? Because Unreal already
ब्लॉकिंग ब्लॉक उसका अकाउंट ब्लॉक करने के लिए रीजन दिया है सेशन पर, तो वो वैलिड क्या कहते हैं, तो ये वैलिड हम तीन चीज हमेशा चेक करते हैं. Can the order be issued by the person who has issued the order? In this case, Sunil can issue the order. Second, account या post. पोस्ट को कर सकते हो ब्लॉक, अकाउंट को नहीं कर सकते हो ब्लॉक. ये लोग क्या ब्लॉक कर रहे हैं? अकाउंट. इज इट वैलिड देन? नो, एज सिंपल एज दैट. तो एएनसी तो हो ही नहीं सकता, अकाउंट ब्लॉकिंग की बात चल रही है. तो बी सेज नो सिंस अनरियल हैज शेयर्ड द रीजन फॉर ब्लॉकिंग. बी डी नो, नहीं सॉरी, एएनसी, बी एंड डी नहीं हो सकता, एएनसी. इज ही राइट? सुनील वॉज क्लियरली टारगेटिंग. क्या टारगेटिंग है? So see, yes, in section 69 of the IT Act only permits blocking information or particular post, not a whole account. Account blocking नहीं हो सकता. So my best and only answer is C. Last. Sunil sends Unreal a fifth blocking order, which says that several of Sachin's latest posts must be blocked. The blocking order sets out several reasons why the post should be blocked, but Unreal does not find them satisfactory. Rather than take on another fight with a government official, however, Unreal blocks the posts and gives Sachin what it thinks is a better set of reason for blocking the post. When Sachin finds out, he claims this is wrong on Unreal's part and the blocking order was inappropriate. Which of the following is most accurate in this regard? You're saying the blocking order was valid, but the actions were inappropriate. Huh? तीसरा वाला क्या? Valid reasons होने चाहिए. Order, was it issued by a person with the authority? Post and not account. Valid reasons given. So legally speaking, they are covered. So the order itself is valid. But were the action proper? I'm not saying legal or illegal, but simply proper, appropriate or inappropriate. They should have given the same reason which the order contained, right? So legally they are protected because they have given a reason. But in case of appropriateness, it is not, because they did not give the exact reason which was actually given to them. So my best option in this case is definitely A. बराबर 6. Chalo, we stop here then, quickly take the attendance, then we meet in the afternoon for the test or tomorrow, as is the case. Chalo, online, if there are questions, ask. Varna, tata, bye bye, see you. फटाफट. Yes. बड़े दिनों के बाद बीच में, लास्ट टाइम इवनिंग में थी, फिर बीच में गुटलियां 2-3 है. हाँ, राजवी. अरमान. चलो जी, अभी क्लैट आइलैंड को दे रहा है, फॉर्म भर देना.